So components of strategic cost management. Components of strategic cost management में सबसे पहला strategic positioning analysis. कि strategic cost management का component मतलब होता है कि वो क्या क्या करता है, what does it do. So it will first do the analysis of strategic cost positioning. Strategic positioning means where you are. The idea is where you are, where your company is concerned with impact of internal and external environment on the overall strategy of the company. It is important to take account of future and to assess whether the current strategy is suitable fit with the strategic position. हम लोग कहाँ पर हैं और जहाँ पर भी हैं, मगर यहाँ पर हैं तो हमारे ऊपर इंटरनल में क्या क्या चीज हमें अफेक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल में हमें क्या क्या चीज अफेक्ट कर रहा है, और हमारा अंदर में मतलब अंदर का जो हमारा सिस्टम है वो कैसा है. ये तीन चीज पे हम लोग को काम करना पड़ता है यहाँ पर, इंटरनल, एक्सटर्नल और हमारा सिस्टम कैसा है. बेसिकली इट्स लाइक full diagnosis of the company. Full diagnosis of the company as in what internal things are going to affect, what external things are going to affect, and what we are internally, how we function. Okay. So external environment मतलब industry environment, market factors, जिसको आप लोग पहले भी पढ़े in the form of PESTEL. PESTEL पढ़े होंगे, आपको याद होगा, full form PESTEL का आपको याद होगा, PSTL. दूसरा इसमें आप लोग Porter's 5 forces भी पढ़ते हैं, वो मेरे साथ भी पढ़ेंगे, बाद में आएगा. Porter's 5 forces, ये बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इंपैक्ट आपके ऊपर कितना पड़ रहा है उसको जज करेगा. सेकेंडली इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर हम आते हैं तो हियर वी अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव द यूनिक थिंग्स, दैट इज व्हाट आर द रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज. कॉम्पिटेंसीज आर समथिंग यूनिक विच आवर कॉम्पिटिटर्स डोंट हैव, based on which we can compete with our competitors. So resources and competencies are internal environment. The third is organizational values, culture and system. Organizational values, culture and system means what policies you make, how your people function, how you behave to changes, how you react to changes and all, what are your internal beliefs. Those are in the third aspect. So if you have these resources and competencies, and if the market factors impact is lesser, and if your value system, culture, organization structure is all strong, then you're surely going to achieve your strategy. That's the idea. So this is strategic positioning analysis. Then the second thing that strategic cost management wants to do in your company is cost driver analysis. Cost driver we already understood कि cost, हर एक cost का एक driver होता है जो उस cost को बढ़ाता है या घटाता है. For example, जैसे आप लोग इंटर में पढ़े हैं, रेंट अगर कोई कॉस्ट है तो रेंट का कॉस्ट एरिया के हिसाब से चलता है. एरिया अगर ज्यादा हो जाएगा तो रेंट का कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, एरिया यदि ज्यादा हो जाएगा तो रेंट का कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, एरिया ज्यादा तो रेंट ज्यादा, तो एरिया इज द ड्राइवर फॉर रेंट. सिमिलरली देयर कैन बी सेवरल डिफरेंट कॉस्ट with their respective cost drivers. There can be a cost like say quality management cost, and the driver of same can be the number of times the product is tested. So there is a driver for each and every cost. So cost driver analysis tries to understand what type of cost drivers an organization can have. So there are two main categories here on the basis of apportioning the cost and on the basis of managing the cost. Apportioning the cost means, say you have first of all your cost which you incur. For example, it can be a simple cost like rent or lighting. Then that cost is supposed to be first apportioned to activity, and then from activity it is supposed to be apportioned to the products. Okay, it is supposed to be apportioned to the products. So any cost has to be first apportioned to activities that you're doing in your organization. This is done using resource cost driver. And when you are apportioning your activity cost to the products, this is done using activity cost driver. So if you'll read this, you'll get the knowledge. So for here, you can use floor area as an example. So if there's a cost like rent, then floor area can be used to apportion the rent cost to the specific activities, and there can be several activities like machining, assembling, quality, testing, packaging. So based on the different activities, there will be activity wise cost driver. For example, it can be machine hours, which will allocate the activity cost to the products. All right. So this is how this too works. Next, on the basis of managing the cost. Next comes on the basis of managing the cost. This is about when you actually set up the organization. When you actually set up the organization, then based on the organization structure that you have set up, based on the products that you have planned to produce, based on the machineries that you have planned to install, there are some costs which will get committed right then. And उस समय जो cost commit हो जाएंगे, वो सारे cost के जो drivers होंगे, उसको हम structural cost driver बोलते हैं. वो आप long term में ही change कर सकते हो, 10 साल बाद, 15 साल बाद, immediately उस पे काबू पाना बहुत मुश्किल होता है. Second होता है executional cost driver, जो आपके काम करने के स्टाइल पे डिपेंड करता है. मतलब आप अपने फैक्ट्री के इंटीरियर को अगर फ्लेक्सिबल रखे हो कि जब चाहे हम मशीनरीज को इस तरह का लेआउट में सजा दिया, इस तरह का लेआउट में सजा दिया, उसके कारण आपका विद इन द फैक्ट्री मटेरियल मूवमेंट या हैंडलिंग का जो कॉस्ट है वो कम हो रहा है, तो वो एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर के कारण हो पा रहा है. सो स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर इज द वॉल्यूम ऑफ विच आर डिटरमाइंड फ्रॉम द स्केल ऑफ ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्सिटीज एंड टेक्नोलॉजीज विच आर डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ
the idea of production. And executional cost drivers are determined from the management style of doing the business, the layout, plant layout, setup or efficiency, product configuration. Maybe sometimes some managers believe that quality is not to be focused on, cost to be focused on. Some managers may believe the opposite. So based on the style of management, the cost will increase or decrease. Linkage with suppliers and customers and many more. If you have a good relationship with your suppliers, you will be able to save some cost. If you have good relationship with customers, you will be able to save some cost. So all those are dependent on your way of doing the business. इसके ऊपर कैलकुलेशंस हम लोगों का नहीं होता जनरली. जो भी कैलकुलेशंस आते हैं वो ज्यादातर आपके रिसोर्स और एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर पे आते हैं और वो भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट में आते हैं. Your